हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। अपने इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए बाय द बोल्शेविक गवर्नमेंट। In my previous videos, I have discussed about how the different phases of the revolution took place in Russia. सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 1905 का रिवॉल्यूशन, उसके बाद फरवरी 1917 का रिवॉल्यूशन. Thereafter we had discussed about the conditions which led to the Bolshevik revolution in October 1917. Now once the Bolshevik party took over the power in Russia following a revolution in October 1917, there were so many changes. So many changes were introduced in the society, in the politics, in the administrative sector, as well as in other aspects related to the human life. So in this video, we were going to discuss about those changes. अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस एज वेल इन विच वी हैड डिस्कस्ड ऑल व्हाट हैपेंड बिफोर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन. So now let us start with the changes that took place in Russia after the October Revolution. पहली चीज जो हमको ध्यान में रखना है, what is that? The Bolsheviks, they were completely against the private property. वो एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते थे जहां पर हमारे सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे वर टू बी सोशली कंट्रोल्ड, सोशली ओन्ड, यानी कि एक कॉमन ओनरशिप सोसाइटी का, और दे वर टू बी रन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. उससे जो भी प्रॉफिट हो, जो भी इनकम हो, that was to be distributed among the people who made that particular resource productive equitably. That means as per their contribution. So this was what happened. First of all, जो पहला important change जो हमको देखने को मिला, that banks and factories, all factories were nationalized. That means the government, इसका मतलब क्या हुआ? The government took over the control and management, यानी कि जो भी हमारे बैंक्स थे, जो भी हमारी फैक्ट्रीज थी, उसके कंट्रोल, उसके मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया. all lands were declared as the social property and peasants
were allowed to take over, or you can say to seize, take over the land under the nobility. यानी कि नोबल्स की जो लैंड थी उसको अलाउ कर दिया गया कि पेजेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते थे, उनको सीज कर सकते थे, उनको टेक ओवर कर सकते थे. अगर आप देखो तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन, लैंड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन among the peasants, you are taking over the land owned by nobility by the peasants. ये लेनिन की एप्पल थीसिस में शामिल था. भाई लेनिन ने ये कहा था वॉर शुड कम टू एन एंड, पहली चीज, यानी कि रशिया मस्ट लीव द वॉर. Secondly, he said that the banks in the country, they were to be nationalized. That means the government must take over the banks in its control. And thirdly, he said that whatever the land owned by the nobility, it was to be transferred to the peasants. So, obviously, both of these steps, the Bolsheviks, they were in line of what we say Lenin's apple thesis. In cities, big houses were partitioned as per the family requirements. फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बड़े बड़े, जिनके पास बड़े बड़े बंगले थे, जिनके पास बड़े बड़े घर थे, उन बड़े बड़े घरों को क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया, उनका पार्टीशन कर दिया. एंड एज पर द फैमिली नीड्स उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फोर्थली, द पार्टी had also renamed, the party was also renamed as the कम्युनिस्ट पार्टी. पार्टी का नाम बदलकर बोल्शेविक पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया. अगेन दिस वाज व्हाट लेनिन वांटेड. लेनिन ऐसा ही चाहता था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया. टू असर्ट द इक्वालिटी इन द सोसाइटी, जितने भी हमारे टाइटल्स थे, टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, दे वर ऑल abolished. All titles of old aristocracy were abolished. इन सभी चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए व्हाट वाज दैट, न्यू यूनिफॉर्म्स were designed for the administrative officials and the army. रशियन आर्मी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए उन्होंने एक नई यूनिफॉर्म जो है डिजाइन किया.
Another important change. Despite opposition from other political parties, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अपोजिशन के बावजूद भी, ठीक है, व्हाट हैपन, लेनिन signed a treaty, a peace treaty with Germany in March 1917 at Brest-Litovsk. Before this, इससे पहले, what happened? The elections were held. The elections were held for Constituent Assembly in November 1917 में रशिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए इलेक्शन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द बोल्शेविक्स दे वर फेल्ड टू गेन अ मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी नहीं मिली. And later on, in January 1918 में, what happened? This event took place in March 1918. Sorry. And here, what happened? In January 1918, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, the Constituent Assembly rejected the Bolshevik changes. यानी कि जो भी वॉल्शेविक्स ने जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे रशिया के अंदर, उन सभी वॉल्शेविक चेंजेस को उन्होंने क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, उसको अप्रूवल नहीं दिया, उसको उन सबको रिजेक्ट कर दिया. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा किया तो लेनिन को गुस्सा आ गया. लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर दिया. क्यों? उसने कहा कि अनसर्टेन जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं रशिया के अंदर, उन अनसर्टेन पॉलिटिकल कंडीशंस में जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है बजाय इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्ट की गई है अंडर अनसर्टेन पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. ठीक है. सो दिस वाज व्हाट हैपेंड कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक्स के चेंजेस को डिसअप्रूव किया तो व्हाट डू वी फाइंड? लेनिन ने क्या किया? लेनिन dismissed the constituent assembly and gave all Russian
ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, the status of the रशियन पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट का उसको स्टेटस दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई जो जिस तरह की कंडीशंस रशिया में हैं, अनसर्टेन पॉलिटिकल कंडीशंस, उन कंडीशंस में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका इलेक्शन हुआ है वो हमारा ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, और इसलिए उन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को क्या डिक्लेयर कर दिया कि यही रशियन पार्लियामेंट होगी। जितनी भी हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सभी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। दैट मीन्स रशिया had become a one party system, जहां पर केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो गई, इलीगल डिक्लेयर कर दी गई। इसके जो एफिलिएट्स थे, इसके जो एलाइज थे, only they were now allowed to participate in the election or to take part in the political activities, otherwise उसके अलावा जितने भी हमारे दूसरे जो वर्कर्स यूनियंस थे या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, they were all declared illegal, उन सब पर बैन लगा दिया गया। Also secret police forces were created to keep an eye and suppress any criticism। यानी कि आप कह सकते हो एक तरह से nobody was now allowed, no political party was allowed, no political organization was allowed to criticize the Bolsheviks, and if they were doing so they were severely punished। बहुत सारे जो हमारे राइटर्स थे, पोएट्स थे, फिल्म मेकर्स थे, एक्टर्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसिया के जो लोग थे, दे बिगेन रैलीड बिहाइंड द बोल्शेविक पार्टी विद द कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों? बिकॉज दे हैड इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया socialism, a socialist order, as well as so many changes that sought to bring equality, the equitable distribution of the wealth, the resources within the country. Moreover, ये सारे जो हमारे changes थे, later all these experiments were also introduced in art and architecture। तो इस तरह से ये बहुत सारी चेंजेस जो हैं रशिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, और लेकिन धीरे धीरे हमारा यहां पर व्हाट डू वी फाइंड कि हमारा कंडीशंस चेंज हुई। जो हमारी बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी ने सीवियर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इंपोज किया ओवर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या आप कह सकते हो सेंसरशिप लॉज वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो वी डू फाइंड
कि ये सारे चेंजेस जो है वो वॉल्शेविक पार्टी ने इंट्रोड्यूस किए. लेटर ऑन देयर वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर इन रशिया, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन you can just go through and revise this particular topic, one of the most important topic. और इसमें से हमारा एक क्वेश्चन भी बन जाता है, what were the changes introduced in Russia after the October Revolution. तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करिए. ये पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में लिखे हुए हैं. यू कैन जस्ट मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर. ठीक है, थोड़ा उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को कंबाइन कर सकते हैं. आई हैव जस्ट ब्रोकन देम इनटू 12 पॉइंट्स. ठीक है, लेकिन उनको आप समराइज करके यू कैन जस्ट मेक देम इनटू, कन्वर्ट देम इनटू 5 or 6 points. That's it. Thank you. Till then, you can just revise.